ॐ अथ दुर्गा सप्तशती सम्पूर्णपाठ। अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सूक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निर्णयं यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च श्राङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामिन्द्री आग्नेयमग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी परतिच्यं वारुणी रक्षेद् वायव्यं मृगवाहिनी उदित्यं पातु कौमारी ऐशान्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेन् दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा सबवाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायं सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायं च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायं भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखञ्चूलेश्वरी रक्षेद कुक्षौ रक्षेद कुलेश्वरी स्तनौ रक्षन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नभौ नाभौ च कामिनी रक्षेद गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यं भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्द्रंष्टा कराली च केशांशैवोर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा न्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायं छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशः कृतिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत्सु भमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिक यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजित त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं य पठेत् प्रयतो नित्यं त्रैसन्ध्यं श्रद्धयान्वित दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेष्वपराजित जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जित नश्यन्ति व्याधय सर्वे लुता विस्फोटकादय थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गन्धर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस बेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कृतिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यं सन्तति पुत्रपौत्रके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ देव्यः कवचं सम्पूर्णम् अथ अर्गलास्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे
जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभविद्रावे विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि महिषासुरनिर्णासे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वत्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं यत्त्वा मर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि द्विशतं नाशं विदेहि बलमुच्चकहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिगृष्टचरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी स्वस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपतिशद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयुम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ॐ देव्याः अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् अथ कीलकम् ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेय प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्पर सिद्धन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलन्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायस्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्यन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः
ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदते इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायैनं नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः सगणसोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यततस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चके भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पद शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॐ देव्यः किलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः। अथ विनियोगः। ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगं शूलं वसुन्धीं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेष्टम निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरादगततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिप स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिषन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत सम्यक् प्रजापुत्राणि बहुरसान् बभूवुः शत्रवो भूपा कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद युद्धमति प्रबलदण्डिना न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जित ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि सोपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्य स भूपते एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्र श्रममाद्राक्षेद् द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्त स्वपदाकृणं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतश्चेतस्य विचरंस तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतन मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं निहितत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यतेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद मम वैरिवशं यात कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितश्रुतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एताच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शस सपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमने त्रक सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच शतं वैश्य प्रशयावनतो नृपं
वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनिर्दारै पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणं कुशलात्मिकां परवर्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहक्षेममक्षेमं किं न साम्प्रतं कथं ते किं न सद्वृता दुर्वृता किं नु मे सुता राजोवाच यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धै पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृत पतिशोजनार्हार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जान्नपि महामते यत्प्रेम प्रबलं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तम कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा कश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्व राज्यङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्व किमेतन्मुनिषत्तम अयं च निकृतपुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झित स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममात्वा कृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिना केचिद् रात्राबन्धास्तथा परे केचिद् दिवात यत्तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टय ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन नहि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादय ज्ञानं च तत् मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यो मन्यत् तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषु कडमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रशाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरं सैषा प्रसन्न वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यं भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कारणविकृते आश्चर्यशेषमभजत् कल्पन्ते भगवान् प्रभो तदा द्वावसुरो घोरौ विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ शनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्ट्वा योगनिद्रां तामेकाग्रमादाय
ग्रहृदयस्थित विबोधनार्थाय हरिर्नेत्रकृतालयं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमेक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा समृद्धिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सद्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयते तदा या त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीत क्वस्त्वं स्तुतोमिहेश्वर विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वं कः स्तुतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वै रुदारेर्देवी संस्तुता मोहयितो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघो बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्या नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरस निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभदुरात्मा नावति वीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माण्डं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यं युयुधे भगवान् हरि पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरस्मत्तो व्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेता मध्ये मे तुष्टो मम वद्याबुवापपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वपापो मापोमयं जगत् विलोक्य ताभ्यं गदितो भगवान् कमले क्षण आवां जहीन यत्रोर्भिः सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयो एवमेष समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य दिव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते ॐ ऐं श्रीमार्कण्डेयपुराणे शावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोत्सवः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ विनियोगः। ओं मध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। अथ ध्यानम् अच्यस्त्रक्परशुं गदे सुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सौरिभ्यमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभून् युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा
महिषे सुवर्णमधिपे देवानं च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो वन्महिषासुर ततः पराजिता देव्या पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे स गरुडध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवाभिः भवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्या नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवातिष्ठति स्वर्गान् निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममारारि विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानं वचांसि मधुसूदन चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननो ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निशक्राम महत्तेजो ब्रह्मण शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरत निर्गतं समहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्ति दिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्रिषा यद्भुत्सां भवं तेजस्तेन जायत तन्मुखं याम्येन चाभवं केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्य कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्दयोस्तेज श्रवणा वनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिता शूलं शूलाद् विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य सुचक्रत शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्यै हुतासन मारुतो दत्तवां चापं बाणपूर्णे तथेश्वरी वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्यै महसहस्राक्षो घण्टा मैरावदाद् गजाद् कालदण्डाध्यमो दण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याः शर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमाम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्त्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान पङ्कजां मालं शिरस्यूरसि चापरम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चाति शोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्या पानपात्रं धनाधिप शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः सट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्य नादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभ अमायताति महतां प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुवो सकला लोका समुद्राश्च चकम्पिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामोचु सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तय दृष्ट्वा समस्तं संक्षुप्तं त्रैलोक्यममरारय सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तु रुधायुधा आहा किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुर अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृत स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयं त्रिषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालं धनुर्ज्यानि स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां
ततः पर्ववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुर युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वित रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुर अयुध्यतायुतानं च सहस्रेण महाहनो 50 नियुतैरशिलो महासुर अयुतानं शतैः षड्भिर्बाष्कलो युधे रणे गजबाजी सहस्रौघै रणैकै परिवारित वृत्तो रथानं कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानं च 50 युयुधे संयुगे तत्र रथानं परिवारित अन्ये च तत्र युतसो रथनागहैर्वृता युयुधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानं दन्तिनां तथा हयानं च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुर तमोरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधो संयुगे देव्या खड्गै परशुपट्टिशै केचिच्च चिक्षिपु शक्ति केचित् पाशंस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव परिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धूतशटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुतासन निःश्वासन् मुमुचो यांस युध्यमाना रणिम्बिका त एव सद्यसम्भूता गणाः शतसहस्रश युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालशिपट्टिशै नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता अबाधयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगान् महासुरान् पातयामास चैवान्यन् घण्टासोन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्य नकरसहित केचिद्द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषंहता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरः सौसरौघेण कृता केचिन्द्रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणन् मुमुचुस्त्रिदशार्दन केशांश्चिद् बाहवश्छिन्नग्रीवस्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारित विच्छिन्नजङ्घास्तु परे पेतुरुर्भ्यं महासुरा एकबाहुक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृधा छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धा युयुधोर्देव्या गृहीत परमायुधा ननिर्तु चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिता कबन्धाश्छिन्नशिरस खड्गशक्तिष्टिपाणय तिष्ठतिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसूरैश्च वसुन्धरा अगम्या साभवस्तत्र यत्राभूत् स महारण षोडीतौघा महानद्य सद्यस्तत्र पृशुस्त्रुवो मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्येक्षयं यथा वह्निस्तृणादारु महात्रयं स च सिंहो महानाद मुत्सृजन्धुतकेसर शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तत्तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै यथैषां ततुसुरदेवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम् श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोत्सवः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुडक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां सुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच
निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुर सेनानी शिक्षुर कोपात् ययो योन्दुमथाम्बिकां सदेवीं सरवर्षेण बवर्ष समरे सुर यथा मेरुगिरे शृङ्गं त्वयवर्षेण त्वयद तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिक्षेद च धनुषाद्यो ध्वजं चाति समुत्सृतं बिव्याद चैव गात्रेषु छिन्न धन्वा नमासुगै सच्छिन्न धन्व विरथो हतस्वो हतसारथि अभ्यधावत तां देवी खड्गचर्म धरोऽसुर सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान् भुजसभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं च कोपादरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुर जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवम्बरात् दृष्ट्वा तदपतन् शूलं देवी शूलममुञ्चत तत्शूलं सतदा तेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतो आजगाम गजारूढ चामर स्त्रीदशार्दन सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभियतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वित चिक्षेप चामर शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणाद् ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैः स्त्रीदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महिं गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैः रतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रस्तरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हत दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातित देवी क्रुद्धा गदापातैः सुनूडयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रस्यामुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरीरनिर्णेयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु शोषण्ये महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चित् तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडितां सान्य शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिद् परान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वास पवनेनान्यन् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुण्णमहीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमण विच्छुन्नमयी तस्य व्यसीर्यत लाङ्गुलेनाहत साब्धि पलायमास सर्वतं धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घना श्वासा नीलास्तशतशो नेपेतुर्नवशो चलान् इति क्रोधसमाध्यात्मा तमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा स चण्डिकां कोपं तद्वदाय तदा करोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमायसं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावस्तस्याम्बिका शिर छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकै तं खड्गचर्मणां सार्धं ततः शोभन्महागज करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुर सोऽपि बलवीर्यमदुद्धत विषाणाभ्यां च विचिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरत्करै उवाच तं महो मदुद्धूत मुखारागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्या समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेन क्रम्य कण्ठे च शूलेनैन मताडयत्
ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृत अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुर तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जगमौ सकला देवतागणा तुष्टुभुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननितु चाप्सरुगणा। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोत्सवः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम कालाभ्रावं कटाक्षैर्कुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशगमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यं त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दिव्या तां तुष्टुवपर्णतिनं रशिरोधरां सा वाग्विप्रहरसपुलको गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्मै विदधातु शुभानिशान यस्य प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतां तृणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरा दिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमध्या यस्या समस्तसुरतां समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमतएव जनैश्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमव्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलयजुषां निदान मुद्गितरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसार दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिककृतप्रतिष्ठा ईषदसहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रेतमा तरुषां तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यशशाङ्कसदृश छवियन्न सद्य प्राणान् मुमोच महिष तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतन्नितं बलं सुविबलं महिषासुरम्य तेषां मता जनपदेषु धनानि तेषां येषां सिनचसीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निवृत्तात्मजभृत्यदारा येषां सदा विदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्य तादृतप्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृतहर्षिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव
शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारका करणाय सदार्धचित्ता एभिर्हतैर्जगो जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टैवैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत् परिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तिर्पवोऽपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वपितीति साध्वी खड्गप्रभानिकरे विस्फुरणैस्तथोग्रे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागताविलयमं सुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये ब्रियं च हन्तु हृतदेव पराक्रमाणं वैरीष्वपि प्रकटितैव तया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त मस्माकमन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापजानि स्वनेन च प्राच्यं रक्षं प्रतीच्यां च चण्डिके रक्षदण्डी दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वत ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्यै कुसुमैर्नन्दनोद्भवै अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनै भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् दिव्युवाच ब्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्त्वविवाञ्छितं देव्या उवाच देव्या ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतशत्रुस्माकं महिषासुर यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृतां संसृतां त्वं नो हिंसेथा परमापद यस्य मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वं तस्यात्यमलानने तस्य वित्तर्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धेऽस्मत् प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मना तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणे पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां यथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ॐ ह्रीं ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोत्सवः। अथ पंचमोऽध्यायः। अथ विनियोगः। ओम अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। अथ ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनन्तविलसच्चेतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनं पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्या मसूराभ्यं सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वन्धिकारं तदिन्दवं कौबेरमतयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च
चक्रतुर्वन्यकर्म च ततो देवी विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यं सर्वे निराकृता महासुराभ्यं तां देवी संस्मरन्त्यपराजितां त्वयस्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायं प्रतुष्टुभो देवाऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो विद्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्रूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्धै सिद्धै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यैर्भुवृतां लक्ष्मै सर्वान्नै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु च या भूतेषु सततं यस्य तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरै पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सान शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभियन्तु चापद या साम्प्रतं चोन्धत दैत्यतापितै रश्माभिरीशा च सूर्यैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तावादियुक्तानं देवानं तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययुतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रुर्भवद्भिः स्तूयते त्रका शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीच्छित्वा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृते देवैः समेते समरे निशुम्भेन पराजिते शरीरकोशाद्यत्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिके तु समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायं तु कृष्णाभूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरां ददर्श चण्डमुण्डस्य भृत्यो शुम्भ निशुम्भयो
ताभ्यं शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यस्ते स्त्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक्वचित् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसु देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिश त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजास्वादानि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुस्सायं तथैवोच्चैस्रवाहय विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमहानीतं यदासिद्वेदसोद्भुतं निधिरेश महापद्मसमानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्दिर्मालामम्लानपङ्कजं छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो या पुरासित प्रजापते मृत्युरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरिशतया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजातश्च समस्ता रत्नजातय बह्निरपि ददौ तुभ्य मग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेष कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वच शुम्भ सतदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं सेव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाव्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा दूतोवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रसिद्धस्तेन त्वत्सकाशमिहागत अव्याहताग्नि सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारी स यदाह शृणु सतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वा नुपासनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वासन्यशेषत तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं शिरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरे उच्चैः सर्वसंज्ञं तद् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयैव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वं देवी लोके मन्यमामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवय्यत परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतं व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता स तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं तया नात्र मिथ्या किञ्चित्तयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृश किं तत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतोवाच अवलिप्तसिमैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृत त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानं सर्वे देवान् वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिग इन्द्राद्य सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रियास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयि वक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामा गमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृत तदा चक्षुषुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यादूतसंवादो नाम पञ्चमोत्सवः अथ षष्ठोऽध्यायः अथ ध्यानम् ॐ नागाधीश्वरभीष्टरां फणिफणो त्वं सौररत्नावली
भास्वन् देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरित समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् सक्रोध प्राह दैत्यानामदीपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारित तामानय बलाद्दृष्टा दुष्टां केशाकर्षणविह्वलं तत्परित्राणद कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते पर स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्वे वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्यस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृत्तषष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृत बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं। ऋषिरुवाच इत्युक्तासोऽभ्यधावत् तामसूरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव त्वं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरस्वरैः ततो धूतशठकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहन कांसीत् करप्रहारेण दैत्यनाशेन चापरन् आक्रम्य चाधरेणान्यन् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरस कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धृतकेसर क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणां देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षियतं कृष्णं देवी केसरिणां ततः चुकोपदैत्याधिपति शुम्भपरस्फुरिताधर आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्रसूरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायं दुष्टायं सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तं बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानी धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोत्सवः। अथ सप्तमोऽध्यायः। अथ ध्यानं ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रीं सरोजे शशिकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालं नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधा ददृशुस्ते ततो देवी निषिद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तं समादातुमुद्यमं चक्रुध्यता आकृष्टचापसीधरास्तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यद्वदनं मसीवर्णमबुद्धता भ्रुकुटिकुटिलात्तस्य ललाटफलकादृतुं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता शिपासिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वैपी चर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापुरितदिङ्मुखा सा वेगेनाविपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामवक्ष्ययत तद्बलम्।
प्राश्निग्राहं कुशग्राही योधघण्टा समन्वितां समादायिकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रदशनैः सर्वयन्त्यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमूरसान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरे मुखेन जग्राहारुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयच्चान्या ननन्यांश्चाताडयत्तथा असिना नियता केचित् खड्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभियतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डविदोद्रावतां कालीमतिभीषणां सर्वर्षैर्महाभीमिर्भीमाक्षीं तां महासुर छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रश तानि चक्राण्यनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुदर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवीं चण्डमधावत गृहीत्वा चाशुकेशेषु शिरस्तेन शिनाच्छिनत् अथ मुण्डो व्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयत् भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डट्टास मिश्रमभेत्य चण्डिकां मया तवातृपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानितौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावच यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओं श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोत्सवः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओं अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतं मयूखैरहमित्ये विभावये भवानीम्। ओं ऋषिरुवाच चण्डे च नियते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु छैते स्वसुरेश्वर ततकोपराधीन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुदायुधा कम्बोनां चतुरशीतिर्नियान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौर्माणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दौरिदा मौर्या कालकेयस्तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरितमया मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुम्भो भैरवशासन निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृत आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानं नादपुरी तदिङ्मुखा निनादर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितानना त्वं निनादमुपस्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषै परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्वेषां भवाय अमरसिंहानामतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथीन्द्रस्य च शक्तय शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययो यस्य देवस्य द्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तत्शक्तिरसुरान् युद्धं माययो हंसयुक्तविमानग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मण शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्त चन्द्ररेखाविभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धोमभ्याययु दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाश्राङ्ग खड्गहस्ताभिपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिव्रतो हरे शक्तिशाप्ययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंहिं नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपो प्राप्ता तत्र शताक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं
मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरभ्रातु विनिष्क्रान्ता विभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्र शिवसतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानम पराजिता दूतं तं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवा तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्र बलवतां देवा सन्तु भविर्भुज यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादथ चेत भवन्तु युद्धकाङ्क्षिण तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छित्वा पिशितेन वा यतो नियुक्तदैत्येन तया देव्या शिव स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पुरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तृष्टिवृष्टिभिः बवर्षोरुद्धतामर्षास्तं देवी ममरारय सा च तान् परिहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वदान् चिच्छेद लीलयाध्याम धनुर्मुक्तिर्महेशुभिः तस्याग्रतस् तथा काली शूलपात विदारितान् खड्वाङ्गोपोतितां शरीरिन् कुर्वती व्यचरत् तदा कमण्डलो जलाक्षेप हतवीर्यान् हतोजस ब्रह्माणि जागरोत्सूत्रन् येन येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौप्रवर्षिणं तुण्डप्रहार विध्वस्ता द्रंशाग्र क्षतवक्षस बाराहमूर्त्यन्यपतं चक्रेण च विदारितां नखैर्विदारितां सान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहिश्चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्याभिदूषिता पेतु पृथिव्यां पतितां सखादात तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टवाभ्युपायैर्विविधैर्नेसुरुदेवारिसैनिका पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धमव्यायौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्य सशरीरत समुत्पतति मेदिन्यं तत्प्रमाणस्तदा असुर युदेशगदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुर ततश्चन्द्रेषु वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेन हतस्यासु बहु शुश्रावशोणितं समन्तस्तु ततो योधास्तद्रूपा तत्पराक्रम यावन्तः पतितास्तस्य शरीरारङ्गबिन्दव तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रम ते चापि युद्धस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृविरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा बबाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरास्त्रावसम्भवै सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरै शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं सा चापि गदया दैत्य सर्वा एव हनत पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवै पपातयो वै रक्तौ गज तेन संशतशोऽसुरा तैश्चासुरा श्रीकसम्भूतैरसुरैः सकल जगत् व्याप्तमासीत् ततो देव भयमा जगमुरुत्तमं तान् विष्णुवान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्सहस्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्ना महासुरान् एवमेष स्वयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणस्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतां मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्य वेदनं चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहु शुस्त्रावशोणितां यतस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातान् महासुरान् तां सखादात् चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितां देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशिभिरिष्टिभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डापित शोणितं शपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्घसमात् निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षमतुल मवापोस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननार्थ श्रीमदोद्धृत ॐ श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोत्सवः।
अथ नवमोऽध्यायः। अथ ध्यानं बन्दुककाञ्चननिभं रुचिराक्षमाला पाशङ्कुशौ च वरदं निजबाहुदण्डै बिभ्राडमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्र मरधाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवता मम दिव्यस्तरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूय शिक्षाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भ यत्कर्म निशुम्भस्तातिकोपनं। ऋषिरुवाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरनिशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानमहासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अव्यधावन् निशुम्भोऽथ मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तयथा पृष्ठे पार्श्वयोश्चमहासुर समदष्टोष्टपुट क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपायौ आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृत निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीन् देव्या शुम्भनिशुम्भयो सरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्ताक्षरां ताभ्यं चण्डिकासो सरोत्करै ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रयुगैरसुरेश्वरै निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुब्रवम् अताडयन्मूर्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी छुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुर तामप्यस द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतं कोपाध्यं तो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानव आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चापि सुरणयत् आविद्यातगतं सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्य त्रिशूलेन भिन्ना भस्मद्वमागता ततः परशुहस्तं तमायन्तं दैत्यपुङ्गत्वम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत् भूतले तस्मिन् निपातिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरथस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधै भुजैरष्टाभिरतुल्यैर्व्याप्य शेषम्भवौ नव तमायन्तं समालोक्यं देवी शङ्खमवादयत् ज्यशब्दं चापि धनु चकारातीव दुःसहं पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानं तेजोवधविधायिन ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदै पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षममताडयत् कराभ्यं तन्निनादेन प्राक्ष्वनास्ते तिरोहिता अट्टहाससमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं ययो दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहारं विकासदा तदा जयत्य विहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागत्यया शक्तिर्मुक्ता ज्वलातिभीषणा आयन्ति वह्निकूटा वा सा निरस्तमहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयन्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताक्षरान् देवी शुम्भस्तत्परिहिताक्षरान् चिच्छेद स्वशरीररुग्रै शतशोथसहस्रश ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं सतदाभियतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजगान शरीरदेवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनां युतं धनुजेश्वर चक्रायुधेन दितिजच्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वस्वरैः सायकांसतान् ततो निशुम्भ वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तु दैत्यसेना समावृता तस्य पतते वासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भ ममरार्दनं हृदि बिभ्यादशूलेन वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निसृतो पर महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य सोऽनवत्तत शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सापवत् भुवि ततः सिंहश्चखाद्वुग्रं द्रंष्टा शून्नशिरोधरान् असुरां तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुरा
ब्रह्माण्डे मन्त्रपूतेन तयो नान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णे कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृता वज्रेण चेन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचित् वेनेश्वरसुराः केचिन्नष्टा महाहवत् भक्षितास्तापरे काली शिवदूते मृगाधिपै। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिक मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोत्सवः। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम् उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रबह्नि नेत्रां धनुसरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैः सददतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धो ब्रवीद्वच बलाबले पाददुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्भमावह अन्यासं बलमाश्रित्य युध्यसे याति माननी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दृष्टमय्येव विसन्त्यो मदविभूतय। ततः समस्ततास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मो रेकैवासीत् तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्य बहुभिरीह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयि कैव तिष्ठाम्याचौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवर्वृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सरवर्षैषितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमवुद्भूय सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचेयान्यथाम्बिका भवञ्ज तानि दैत्येन्द्रश्च तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्ज लीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः। ततः सरस्वतीर्देवी माच्छादयतशोऽसुर सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यसकरे स्थितां। ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवी दैत्यनामाधिपेश्वर तस्या पतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचारकरामलम् हताश्वशतदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथि जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यत चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशिते शरै तथापि सोऽभ्यधावत्तं मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स्वमुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव देव्यास्तं चापि सा देवी त्यलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहारभियतो निपपात महीतले स दैत्यराजमहसा पुनरेव तथोत्थित उत्पत्य च परिगृह्य चैर्देवीं गगनमास्थित तत्रापि सा निराधार युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धि मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगित अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सगतासु पपतोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षत चालयन् सकलां पृथिवीं साब्धिद्वीपं सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्वास्थमतिवाप निर्मलं च भवन्नव उत्पातमेघशोल्काये प्राग संस्थे समं ययौ सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा तत्र पातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगो अबादयंस्तथैवान्येन ऋतुसाप्सरोगणा बभो पुण्यस्तथा वाता सुप्रभो बुद्धिवाकर जोजल्लुसाग्नय शान्ता दिग्गजनितस्वना। ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोत्सवः। अथ एकादशोऽध्यायः अथ ध्यानं बालरविद्योतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रयुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिम्। ओम ऋषिरुवाच देव्या हति तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमस्तां
कात्यायनीं तुष्टुभूरिष्टलाभाद विकासि वक्त्राब्ज विकासितासा देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यत स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि दाप्यायते कृष्णमलङ्घ्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतद् त्वं वै प्रसन्ना भुवि भक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितमं वयैतद् काते स्तुतितं व्यपरापरोक्ति सर्वभूत यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुतास्तूयते का वा भवन्तु परमोक्तय सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परदो शक्ति नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूति सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कोशाम्बसरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुकुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाश्राङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे द्रंष्टोदन्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणे शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमोस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते द्रंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेरे सरस्वती वरे भूति भ्रवि तामसी नियते त्वं प्रसीदेषु नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैव्यस्तराहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सम्यं लोचन त्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिव्य कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकराल मत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ते दैत्य तेजांसि स्वनेन पुर्य या जगत साघंता पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरा श्रीवसा पंक चर्चितास्ते करोज्जल सुबाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नतावयं रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामं सकलान विष्टां त्वमाश्रितानं न विपन्नराणं त्वमाश्रिताय श्रयतां प्रयन्ति एतत् कृतं यत् कथनं त्वयाद्य धर्मद्विषा देवी महासुराणां रूपैरणैकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृतं विगा तत्प्रकुरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चका त्वदन्या मम त्वगरतेति महन्नकारे विभ्रामयते तदधीदति विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्र रयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथा विमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वं विश्वस्य वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालयन रिभीते नित्यं यथा सुरवधा ददुनैव सद्य पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पादपाकजनितां समहोपसर्गान् प्रणतानं परिचितोत्तम देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासी नामिड्ये लोकानं वरदा भुव देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छद तं ऋणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचु सर्वबाधप्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यभूत् पश्यते नन्दगोपगृहे जात यशोदागर्भसम्भवा ततस्तु नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यातिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांश दानवान् भक्षयन्त्यास तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा स्तुवन्तुमव्यहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनवृष्ट्या मनं वसि
मुनिभिः संस्तुता भूमौ भविष्याम्ययोनिजा ततः सतेन नेत्राणं निरीक्ष्यामि यन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षी मिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवै भरिष्यामि सुराशाकैराविष्टै प्राणधारकै शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्म्यहं भुवि तत्रैव च भरिष्यामि दुर्गा माख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तय भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्ख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामिरेति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानबोत्था भविष्यति तदा तदावतिर्यारहं करिष्याम्यरिसंशयम् ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणकी मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुतिर्नामैकादशोत्सवः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ ध्यानं विद्युद्यामसमप्रभां मृगपतेः स्कन्धस्थितं भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राडामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्ये स्तोष्यते समाहित तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयं मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद् वदं शुम्भ निशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतस श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापद भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजत न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सोऽस्त्ययनं हि तत् उपसर्गा न शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं समयन् मम यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद् विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिष्ठिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वित सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुमान् रिपव संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतं शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्विदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहा विभूतानं बालानं शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च निर्णं मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणं बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानं पठनादेवनाशनं सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमै विप्राणं भोजनैर्होमै प्रोक्षणीयैरर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति तेभ्यो जन्मानां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मै श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिस्तु तयो यश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रेत्सन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारित दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितपोते महारणवे
पतत्सु चापि सा शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभाववत् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतः सरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्ता स भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानं तत्रैवान्तरदीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारन् यथा पुरा यज्ञभागभुज सर्वे चक्रुर्विनिहतारय दैत्याश्च देव्य निहते शुम्भे देव रिपो युधे जगन्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च वीर्ये शेषा पातलमाययो एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगत परिपालनं तयेतन्मयते विश्वं सयैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्यं महाकाले महामारी स्वरूपया शैवे काले महामारी शैव सृष्टिः भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानं शैव काले सनातनी भवकाले नृणां शैव लक्ष्मीर्वृद्धिः प्रदागृहे शैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रां स मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोत्सवः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अथ ध्यानं बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओं ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवत विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मुह्यन्ते महिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरी आराधिता शैव निर्णं भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा सुरथ स नराधिप प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाय नदीपुलिन संस्थित स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारो यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ दधतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सुगृक्षितं एवं समाराधयतो स्त्रीभिर्वरसैर्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया सकुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तम्। तत् मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमभिभ्रंश्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विण्यमानस ममेत्यहमिति प्राज्ञसङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्निर्पते स्वराज्यं प्राप्स्यसे भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूय सम्प्राप्य जन्मदेवादविवस्वत श्रावणिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तो विवाञ्छित तं प्रेक्षामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हितं सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्यवरं लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षभ सूर्याजन्म समासाद्य सावरणी भविता मनु एवं देव्यवरं लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियर्षभ सूर्याजन्म समासाद्य सावरणीर्भविता मनु। ओम क्लीं ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावरणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोत्सवः। ओम अथ प्राधानिकं रहस्यम्
ओम अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता यथोक्त फलप्राप्त्यर्थं जपे विनियोगः। राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्तयोदिता एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे। ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तवावाच्यं नराधिप सर्वसाध्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृष्णं व्यवस्थित मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनिं तप्तकाञ्चन वर्णाभा तप्तकाञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरे बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि सा भिन्नञ्जन शङ्काशत्रंताङ्कितपरानना विशाललोचना नारी बभुव तनुमध्यमा खड्गपात्रशिरखेटैरलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राडा हि शिरस्त्रजं सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसीं परमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहे तुभ्यं नमो नमः तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरतया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः एवि कर्माणि ते ज्ञात्वा योधिते सोऽश्नुते सुखं तामित्युक्ता महालक्ष्मी स्वरूपमपरं नृप सत्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं ददौ अक्षमालङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी सा बभूव वरा नारी नामन्यस्यै च सा ददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा सदीश्वरी अथोवाच महालक्ष्मीं महाकालीं सरस्वतीं योवां जनयतां देव्यौ मिथुनेशानुरूपत इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन्विदे विरिञ्चेते धातरित्याह तं नरं श्रीपद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियं महाकाली भारती च मिथुने सृजत सह एतयोरपि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरं जनयामास पुरुषं महाकाली सीतां त्रियं सरुद्रशङ्करस्नाडु कपर्दी च त्रिलोचन त्रयी विद्या कामधेनु शास्त्री भाषाक्षरासुरा सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते विष्णु कृष्ण ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दन उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी शुभगा शिव एवं युवतयः सद्य पुरुषस्त्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो न पश्यन्ति नेतरे तद्विदो जना ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीं नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं सुरया स सम्भूय विरिञ्चोण्डमजीजनद विभेद भगवान् रुद्रस्तद्गौर्या सह वीर्यवान् अण्डमध्ये प्रधानाधिकार्या जातमभून् नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावर जङ्गमं उपोष पालयमास तल्लक्ष्म्या सह केशव संजहार जगत सर्वं सह गौर्या महेश्वर महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्त्वमहीश्वर निराकार च साकार चैव नानाविधानभृत् नामान्तरैर्निरूपेस्य नाम्ना नान्येन केनचित् ॐ पारधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम् अथ वैकृतिकं रहस्यं ऋषिरुवाच ओम त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्रिदोदिता सा सर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवती रियते योगनिद्रा हरे रक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटवनाशार्थं यं तुष्टावाम्बुजासना दशवक्त्रा दशभुजा दशपादञ्जन प्रभा विशालाय राजमाना त्रिशल्लोचनमालया सुभद्रशनतं सा भीमरूपा पिपमिप रूपसौभाग्यकान्तिनं सा प्रतिष्ठा महाश्रिय खड्गबाणगदा शूलचक्रा शङ्खवसुण्डविरित परिगं कार्मुकं शिरसं निश्चच्योतिद्रुधिरं ददौ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुस्तराचरं सर्वदेव श्रीरेभ्यो यावीर्भूतामितप्रभा त्रिगुणा महालक्ष्मी साक्षान्मयी समर्दिनी श्वेताननानीलभुजा सुश्वेतसतनमण्डला रक्तमध्य रक्तपादा नीलजङ्गुरुन्मदा सुचित्रजगनाचित्रमाल्यं
सर्वविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूप सौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधन्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाद करक्रमाद अक्षमाल च कमलं बाणो शिकुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शङ्को घण्टा च पाशकं शक्तिर्दण्डस्तरं चापं पानपात्रं कमण्डलो अलङ्कृतभुजामेभिरायुधै कमलासनं सर्वदेवमयीमी सा महालक्ष्मी नृप पूजेत सर्वलोकानं सदेवानं प्रभुर्भवद गौरीदेहा समुद्भूता या सत्त्वैक गुणाश्रय साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिर्वैरुणे ददौ साष्टभुजा बाणमुशले शूलचक्रभुज शङ्खं घण्टं शाङ्गुलं च कारमुकं वसुधादिव एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छते निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिवारणे इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातु पृथगासं निशामय महालक्ष्मी यदा पूज्य महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्येत् पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरिञ्चीश्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्मी ऋषिकेश पुरतो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्यदशानना दक्षिणेष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिपदशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तथा कालमृत्यु च सम्पूज्य सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिवारणे नवस्य शक्तये पूज्यस्तदा रुद्रविनायको नमो देव्यै इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समरचयत् अवतारतैर्चार्यं स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रय अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मी महाकाली शैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिताय जगतप्रभु पूजे जगतं धात्री चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारे गन्धपुष्पैः तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष समन्विते हृदि रक्तेन बलिना सेन सूर्या नृप बलिमांसादि पूजेयं विप्रवर्जामयेरिताम् तेषां किल सुरामांसरेणोक्ता पूजा नृप क्वचित् प्राणामा चमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना शक्रुपुरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्विते वामभागे ग्रतो देव्यश्छिन्नशिरसम्मासुरं पूजयन् महिषमेन प्राप्तं सायुज्यमहिषया दक्षिणे पुरतसिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेत् देव्या धृतमेन चराचरं कुर्या च स्तवनं धीमा तस्या एकाग्रमानसं ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुभितचरितैर्मे एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोर्य चरितार्थं तु न जपेत् जप क्षेत्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारं कृत्वा कृताञ्जलि क्षेमापयेत् जगन्धातृमुहुर्मुहुरतं धृतप्रतिश्लोकं च जुह्यात् पायसं तिलसर्पिषा जुह्यात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हवि भूयो नाम पदैर्देवी पूजयेत् सुसमाहितं प्रेतप्राञ्जलिप्रयः प्रणम्यारोप्य चात्मनि शुचिरं भावयेदिशां चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं य पूजित भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरी भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्य पुण्यानि निर्देहत परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ॐ वैकृतिं रहस्यं सम्पूर्णम् अथ मूर्तिरहस्यं ऋषिरुवाच ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजास्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्या जगत्त्रयम् कनकोत्तमकान्ति सा सुकान्ति कनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलङ्कृत चतुर्भुजा इन्द्रिया कमला लक्ष्मी शास्त्री रुक्माम्बुजासना या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मया नग तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहं रक्ताम्बर रक्तवर्णा रक्तसर्वाङ्गभूषणा रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका पतिं नारी वनुरक्ता देवी भक्तं भजे जनं वसुदेव विशाला स सुमेरुयुगलस्त दीर्घौ लम्बावती स्थूलौ तावतीव मौनोहरौ कर्कशावती कान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधि भक्तान् सम्पाययद्देवी सर्वकामदुगौस्तनौ खड्गं पात्रं मुसलं लाङ्गूलं च विवृति साख्यातं रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च अनया व्यक्तमखिलं जगत्सावर जङ्गमम् इमं या पूजेत भक्त्या सर्वाप्नोति चराचरं भुक्त्वा भोगन् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् अदितेय इमं नित्यं रक्तधन्यबभुस्तवं तमसा परिचरित देवी पतिं प्रियमवाङ्गना शाकम्भरी नीलवर्णं नीलो
कपोलोत्पलविलोचना गम्भीरनाभिस्त्रीबलि विभूषित तनुधरी शुकर्कश समुत्तुङ्गवृत्तविनगस्तनि मुष्टिं शीलमुखापूर्णं कमलं कमलालय पुष्पवल्लभं मूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयं काम्यानन्तरशैर्युक्तं शत्रूणामृत्युभयापहं कार्मुकं च सुरतकान्तिविवृति परमेश्वरी शाकम्भरी शताक्षी सा शैव दुर्गा प्रकृतिता विश्वका दुष्टतमनि समनि दुरितापदम् उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायन् जपन् सम्पूजयन् नमन् अक्षयमश्नुते शीघ्रमन्नापानामृतं फलं भीमापि नीलवर्णा स त्रमष्टादशनभासुरा विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा चन्द्रहासं च डमरुं शिरपात्रं च बिभ्रति एकवीरकालरात्रि शैवोक्ता कामदास्तुता तेजोमण्डलदुर्दशा भ्रामरी चित्रकान्तिवृ चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता चित्राभरमरपाणी सा महामारीति गीयते इत्येता मूर्तयो देव्या याख्याता वसुधाधिप जगन्मातु चण्डिकाय कृतिता कामधेनव इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यत्वया व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप्य निरन्तरं सप्तजन्मार्जित घोरैर्ब्रह्महत्या समैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणं मुच्यते सर्वकिलविजय देव्याधानं मया ख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं माद तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदम् एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यति सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम् ॐ मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम् अथ क्षमा प्रार्थना अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरे आवाहनं न जानामि विसर्जनं भोजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति सुच्चरेद् यं गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदयासुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानविस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तस्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणार्चामिमं प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यादिगुह्यगोप्यश्री त्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी श्रीदुर्गार्पणमस्तु। अथ सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रं शिव उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजाप शुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रं किलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन सुयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं तम्भोनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वलय ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते सुमन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हिमादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै हिरङ्कारी प्रतिपालिका क्लिङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च एकारी वरदायिनी विच्चे च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धाम धीं धुं दुर्जटे पत्नी भां भीं बुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सिं सुं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं 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 जम्बनादिनी भ्रां ह्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं सं बिं दुं ऐं बिं हं छं दिजाग्रं त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीना सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धि अर्णे रोदनं यथा श्रीरुद्रयामलिगौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्र सम्पूर्णम् ॐ तत्सत्।